Hi guys, so moving on to the next questions. Okay, now this question. Char star A is equal to Yashva, char star B is equal to WIPRO 20, char star R is equal to A, char star S is equal to B. Printf string length B plus 3R minus 1S. Right? The question is simple. Now let's see how we're going to solve this. Now when you write char star is equal to Yashva, let's suppose the base address starts from 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 for null. Similarly 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16 you have null, right? So your A is pointing at the base address of the string Yashva, which is A is pointing at 1. Similarly B is pointing to the base address of the string WIPRO 20. So that the B is pointing at A. Now char star R is equal to A means, when you write char star R is equal to A means, you have a pointer char star R and R is equal to A. It means your R is pointing at 1 itself. Similarly your S is pointing at 8 itself, right? S is pointing at B. So A address is 1, B address is 8. So S is pointing at 8 and R is pointing at 1. Fine. So far so good. Now string length B plus 3. Now this is important. String length B plus 3 R minus 1 S. Now can you write this as like this? B plus star R plus 3 minus star S plus 1. Because as I already told you that A of I is what? It is nothing but it is equivalent to star of A plus I. Fine. So B plus 3R I can write as star of R plus 3. 1S I can write as minus star of S plus 1. So now what is R plus 3? Your R is pointing at 1. 1 plus 3 plus 1 plus 2 plus 3. And star of this is H. So this is your H minus S plus 1. Your S is pointing at 8. 8 plus 1 is 9. And star of 9 is F. So H minus F is what? What is the S value? The A, B, C, D, E, F, G, H. So if I say H is 8, A, B, C, D, E, F, F is what? 6. So 8 minus 6 is 2. Because यार अगर तुम S का एक difference लोगे वो भी 2 ही है, because continuous है, अल्फाबेट ही तो है. तो मैंने अगर 1 से स्टार्ट कर दिया, H की लोकेशन 8 है, F की लोकेशन 6 है, तो H minus F कितना हो गया? 2 हो गया. So ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया? ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया. It is equal to B plus 2 string length. B plus this value is 2. So B plus 2. So B is what? B is this. Plus 2 means if I write plus 2, B plus 2 plus 1 plus 2. It is pointing at now R, right? It is pointing at R. So now tell me what is the string length of this? What is the string length? String length we will start counting from this position. So string length is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we are returning integer, so answer is 6. Pretty simple. Now again let me repeat. When you write char star is equal to Yashva, it means your A is pointing to the base address of the string. So A is pointing at 1. If you write char star B is equal to, if you initialize some string, it means your B points to the base address of the string. So B is pointing at 8. Now you are writing char star is equal to A, means your R is pointing to the base address of the string A and S is pointing to the base address of the string WIPRO 20. So means R is pointing at 1 and S is pointing at 8. Fine. So R is pointing at 1 and S is pointing at 8. So 3R. 3R is nothing, star of R plus 3. So this is your R plus 1 plus 2 plus 3. So R plus 3 is star of this is H. So this is H. Similarly S plus 1 G plus 1 is this 9, star of 9 is F. So H minus F, 8 minus 6. अगर S का भी लोगे तब भी difference 2 ही आएगा. ठीक है. तो इसका डिफरेंस हो गया 2. तो ये हो गया B plus 2. तो स्ट्रिंग लेंथ तो B plus 2. B कहाँ पे हमारा ये है, प्लस 2 करूँगा, प्लस 1 प्लस 2 10 के एड्रेस पे आऊँगा. अब मैं यहाँ से स्ट्रिंग लेंथ को काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6. तो आंसर इज 6. राइट. गुड क्वेश्चन. यार सारे ही अच्छे हैं, अब मैं बार बार तो भूलूंगा ही नहीं. यार कोशिश ये क्या करो, अगर क्वेश्चन सामने लिखे हुए तो अपनी तरफ से एक बार पॉज करके ना क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो कि क्या पता हो जाए, क्या पता हो जाए. चलो इसको ट्राई करते हैं. ओके.
int a, इट्स अ 2D एरो राइट, 1 2 3 4 5 6। ओके इसको बना लेते हैं यार, ऐसा करते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास हर 1D के अंदर जो भी 1D होगी मेरे 1D के अंदर 3 एलिमेंट है, तो मैंने यहाँ से कर लिया। दिस इज माय 0th 1D और ये मेरी फर्स्ट 1D। फाइन, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज योर A, दिस इज योर स्टार एंड दिस इज योर स्टार स्टार। जैसे मैंने बताया था एड्रेस अज्यूम कर लो 100 104 108 112 116 120। फाइन, this is pretty important, right? Here PTR is your pointer, PTR bracket में है, it is not an array of pointer, it is pointer pointing to, PTR is a pointer to your array of 3 integer and this PTR is containing address A and value of A is 100, so this is your PTR. Fine, this is your PTR. Now printf star PTR plus 1. Now see, star PTR1. How will you solve this star PTR plus 1? Can you write this as star? Let this be A. A1 is star A plus 1. Can I write this as star PTR plus 1? एक ही बात है, ये ब्रैकेट में इट इज जैसे A of I क्या होता है, स्टार ऑफ A प्लस I। अगर मैं इसको A मानूं तो स्टार ऑफ A प्लस 1। ठीक है, मेरा PTR यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इसका स्टार क्या हो गया, इसका स्टार हो गया बेस एड्रेस ऑफ द 0th एलिमेंट। Star of this PTR is pointing at the base address of 0th 1D. When you put a star, you move the base address of the 0th element. तुम यहाँ पे आ गए, प्लस 1 करूंगा तो बेस एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट 104 पे आ गए और इसका स्टार के 2, तो इसका स्टार प्रिंट हो गया 2, राइट। सिमिलरली स्टार PTR अगर मैं इसको 2 करता हूं तो यहाँ पे 2 हो गया। स्टार PTR पॉइंट कर रहा है A पे, स्टार इसका क्या हो गया बेस एड्रेस ऑफ द 0th 1D, बेस एड्रेस ऑफ द 0th एलिमेंट, प्लस 2 करूंगा प्लस 1 प्लस 2 108 के एड्रेस पे आऊंगा, 108 का स्टार के 3, तो इसका आंसर आ गया 3। तो फर्स्ट प्रिंटफ मेरा आ गया 2, सेकंड प्रिंटफ मेरा आ गया 3। नाउ नेक्स्ट लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस प्लस PTR। अब मैं प्लस प्लस PTR करूंगा तो क्या होगा ये बताओ, मेरे को ही बताओ। PTR जो है is a pointer to an array of 3 integers, मतलब PTR is a pointer to an array of 3 integers, 1 2 3। अगर मैं इसमें प्लस प्लस करूंगा तो कितने का जंप होगा, ऑब्वियसली अगर इस PTR मेरा इसको पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, 4 साइज 412 साइज, अगर मैं यहाँ पे जंप करूंगा तो 12 का जंप होगा और कहाँ पे आ जाऊंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा, A plus 1 पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो प्लस प्लस PTR किया, आई विल मूव टू द बेस एड्रेस ऑफ योर फर्स्ट 1D, मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब फिर वही काम मैंने किया, स्टार PTR, अब मैं स्टार PTR 1 को मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मैं इसको वही लिख दूंगा दोबारा, स्टार, इसको मैंने लिख दिया स्टार PTR प्लस 1। तो स्टार पे इसका स्टार क्या हो गया, बेस एड्रेस ऑफ द 0th एलिमेंट ऑफ फर्स्ट 1D, प्लस 1 करूंगा 5 के एड्रेस पे आ गया और इसकी वैल्यू कितनी होगी 5, सो दिस इज 5। सिमिलरली 2 वाले को सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, क्योंकि मेरा PTR पॉइंट कर रहा है बेस एड्रेस ऑफ द फर्स्ट 1D, एक स्टार लगा दूंगा, रिमूव द बेस एड्रेस ऑफ द 0th एलिमेंट ऑफ फर्स्ट 1D, प्लस 2 करूंगा प्लस 1 प्लस 2, इसका स्टार 6, सो आंसर इज 6। तो इसका आंसर आ गया 5 6, है ना। गजब के क्वेश्चंस हैं यार, जब तक प्रैक्टिस, अब ये यार इसको बस प्रैक्टिस करनी है और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी कंसेप्ट्स हैं मैं सारे क्लियर करूंगा। और मैंने 1D 2D 3D की सीरीज भी डाल रखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंटर्स को समझने के लिए, तो उसको एक बार जरूर रिवाइज करना है, जरूर देख लेना। ये सारे क्वेश्चन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के, डोंट एक्सपेक्ट दिस टू आस्क इन सर्विस बेस्ड कंपनीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। गेट, इसरो, TIFR, योर नेट एग्जाम, सब में UGC नेट, सब में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे भर भर के। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय।